Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. Children, this is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to start with chapter number 14 of your book and the name of the chapter is World Heritage Sites in India. So there are many buildings that are very famous in India and we are going to learn about some of them today. So before starting, let's do this exercise given in your book. Here some pictures are given. You have to write down their names. These are some famous buildings of India. You have to write their names. So here the first picture is of India Gate. Now the second picture is of Jantar Mantar. Now the next picture is of a very beautiful building and that is Taj Mahal. Next picture is of Red Fort. This is the picture of Hawa Mahal. And here this picture is of Qutub Minar. So these are a few of the famous monuments or you can say buildings of India. Now let's read then about them. So the first topic that we are going to learn is World Heritage Site. So the World Heritage Site is a landmark or area with legal protection by an international convention administered by the UN. So World Heritage Site क्या है? ये एक लैंडमार्क है या फिर एक ऐसा एरिया है विथ लीगल प्रोटेक्शन जिसको गवर्नमेंट लीगली प्रोटेक्ट कर रही है बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन मीन्स एक इंटरनेशनल बॉडी इसमें इंक्लूडेड है इन्वॉल्व है जो इसके प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है एडमिनिस्टर्ड बाय यूएन यूनाइटेड नेशंस इसे एडमिनिस्टर कर रही है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सो UNESCO is doing this work of protecting the World Heritage Sites. These sites could include forests, mountain lakes, monuments, buildings, complexes or cities. So ये जो sites हैं, जो World Heritage Sites हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है या तो कोई forest हो सकता है, कोई mountain, lake, monument हो सकता है, कोई building, कोई complex या फिर कोई city. The aim of recognizing any site as heritage is to ensure its conservation for the future. So किसी भी साइट को एक हेरिटेज साइट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसे कंजर्व करके रखा जा सके फॉर द फ्यूचर के लिए ताकि फ्यूचर में जो लोग आएंगे वो भी उन साइट्स को देख सके उनकी इम्पोर्टेंस को समझ सके. So here a question is given children, what does a country's heritage tell about it? So country का heritage इसके बारे में क्या बताता है? Now let's learn about the first building here and this is Taj Mahal. Taj Mahal immense mausoleum of white marble built in Agra by order of Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife बेगम मुमताज महल. सो ताजमहल एक बहुत ही इमेंस मीन्स बहुत ही खूबसूरत मैसोलियम में आप कह सकते हो जिसे कब्र कहते हैं ऑफ वाइट मार्बल. ये वाइट मार्बल से बना हुआ है बिल्ट इन आगरा और ये कहाँ पे है? ये आगरा में बाय द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां. और इसे किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था. किसके लिए? फॉर हिज वाइफ जिनका नाम था बेगम मुमताज महल. The Taj Mahal is the jewel of Muslim art in India. So Muslim art
का ये क्या है, एक तरीके का ज्वेल है, मीन्स जवाहरात है. It is one of the universal admired masterpieces of the world's heritage. So world heritage का ये एक masterpiece part है. It stands on the bank of the river Yamuna और ये यमुना river के किनारे है. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world, constructed by more than 22,000 laborers. So 22,000 से भी ज़्यादा laborers लगे थे इसे बनाने में. It stands at the center of a square platform. एक square platform पे ये खड़ा है, surrounded by gardens and water channels. और इसके चारों तरफ क्या है, garden है और बहुत सारे water channels हैं, fountains हैं. It contains the grave of the emperor and the empress. So इसमें क्या है, grave means कब्र है emperor और empress की. It is guarded by 4 miniatures which are topped by kiosk और छतरी in each corner. So इसके चारों कोनों में कुछ miniatures हैं and minarets हैं and इसके ऊपर एक छतरी लगी हुई है जिससे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है. Detailed floral carving, geometric designs, beautiful calligraphy and precious stones adorn the wall of the mountain. So यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे फ्लोरल कार्विंग्स किए हैं, फ्लावर्स का को कार्व किया गया, नक्काशी की गई है, ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाए गए हैं, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी में चीजों को लिखा गया है. एंड प्रीशियस स्टोन्स, बहुत ही कीमती पत्थरों का यूज किया गया है इनकी वॉल्स को बनाने के लिए, ताजमहल की वॉल्स को बनाने के लिए. इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉन्यूमेंट ऑफ इट्स पीरियड एंड टुक 22 years to build. So अपने टाइम का सबसे आप कह सकते हो एक्सपेंसिव मॉन्यूमेंट था क्योंकि इसको कितने साल लगे थे, 22 years लगे थे बनने में. Millions of tourists and official dignitaries visit it every year. So बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे, millions and millions of tourists यहाँ पे हर साल आते हैं. कई सारे ऑफिशियल डिग्नेटरीज आते हैं यहाँ पे विजिट करने इसकी ब्यूटीनेस को देखने के लिए. Now the next monument that we are going to talk is Red Fort. So here is a picture of Red Fort. The Red Fort or Lal Killa was designated UNESCO World Heritage Site in 2007. So 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था. It was constructed by Shahjahan again, and when he established शाहजहानाबाद, जब उन्होंने शाहजहानाबाद की खोज की थी तब उन्होंने ये रेड फोर्ट बनाया था. प्रेजेंट डे एट दिल्ली, तो ये शाहजहानाबाद का है आज के टाइम में, दिल्ली में है. एज हिज कैपिटल सिटी इन द 17th century CE. तो अपने कैपिटल सिटी के रूप में उन्होंने शाहजहानाबाद बनाया था और इसलिए उन्होंने वहां पे ये रेड फोर्ट बनाया. The Red Fort is made of red sandstone. Red Fort जो red sandstone से बना है, hence its name. तो इसलिए इसका नाम Red Fort रखा गया है. It is a large complex which houses several royal buildings. So ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी रॉयल बिल्डिंग्स हैं. The Diwan-e-Aam and the Diwan-e-Khas were halls used for public and private purposes respectively by the emperor. So यहाँ के जो हमारे एम्परर शाहजहां थे उनके द्वारा ये यहाँ का जो दीवान-ए-आम था और दीवान-ए-खास था ये यूज किया जाता था फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट पीपल and for public and private purposes. The famous peacock throne of Shahjahan. शाहजहां का बहुत ही फेमस एक पीकॉक थ्रोन था, मीन्स राजगद्दी थी, वो सीटेड इन द दीवान-ए-आम. दीवान-ए-आम में वो लगी हुई थी. रंग महल वॉज ऑल्सो द पैलेस ऑफ क्वींस. सो यहाँ पे जो क्वींस थी, जो उनकी रानियां थी, उनके लिए जो पैलेस बना था उसका नाम था रंग महल. इट ओवरलुक्स द यमुना. वहां से यमुना नदी साफ दिखाई देती थी. मोती मस्जिद इज द मॉस्क. सो मोती मस्जिद जो है एक मॉस्क है. एंड नक्कर खाना इज द एंट्रेंस गेट. और इनका जो एंट्रेंस गेट था उसका नाम था नक्कर खाना.
मीना बाजार इज अ फेमस मार्केट इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर ही एक बाजार है, एक मार्केट है जिसका नाम था मीना बाजार। चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद आर लोकेटेड जस्ट अपोजिट टू इट। तो इस रेड फोर्ट के अपोजिट साइड में चांदनी चौक और जामा मस्जिद ये दोनों अपोजिट में इसके लोकेटेड है। इट इज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। One, on Independence Day every year, the Prime Minister of India hoists the national flag at Red Fort and addresses the nation from there. So, ये एक जो हमारा रेड फोर्ट है वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट है और हर इंडिपेंडेंस डे पे जो कब आता है 15 अगस्त। सो हर इंडिपेंडेंस डे को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो क्या करते हैं, यहाँ पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं और नेशन के लोगों से बात करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम AI facts. An artificial intelligence tool called Midjourney has given a glimpse of what our major historical monuments will look like if they are made in the 23rd century. सो AI जो है एक टूल है जिसमें मिड जर्नी है, एक तरीके का टूल। ये क्या करता है, एक ग्लिम्स देता है कि अगर हमारे जो मेजर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो अगर 23rd सेंचुरी में बनते तो कैसे दिखाई देते। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कुल्लू रीजन in the state of हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आपको ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क मिलेगा। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1984 and was formally notified as a national park in 1999। सो ये जो है 1984 में बना था, लेकिन एज अ नेशनल पार्क इसे नोटिफाई किया गया इन द ईयर 1999. GHNP, which is the short form of Great Himalayan National Park, was awarded UNESCO World Heritage Site statue in 2014. So 2014 में यूनेस्को ने इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था in recognition of its outstanding significance for biodiversity conservation. सो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखा गया, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। द पार्क प्रोटेक्ट्स ओवर 1000 प्लांट स्पीशीज। सो यहाँ इस पार्क में 1000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज मिलेंगे, इंक्लूडिंग मेनी मेडिसिनल हर्ब्स, 31 मैमल स्पीशीज। सो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 31 मैमल स्पीशीज मिलेंगे हमें, 209 बर्ड स्पीशीज मिलेंगे, एज वेल एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। सो ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4 ऑफ GHNP's mammal species and 3 of bird species are globally threatened, including the musk deer and the western horned ट्रैगोपैन। सो यहाँ पे जो भी स्पीशीज है उसमें से जो है 4 मैमल स्पीशीज और 3 बर्ड स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है। मीन्स अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमें दूसरी स्पीशीज देखने को नहीं मिलेंगी। सो दीज आर थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द मस्क डियर। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ मस्क डियर। दीज इट इज ऑल्सो थ्रेटेंड और यू कैन से एंडेंजर्ड स्पीशीज। And the western horn, this is another animal here, western horn tragopan. So ये दोनों एनिमल्स ऐसे हैं। इनके अलावा भी कुछ मैमल और कुछ बर्ड्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें इस नेशनल पार्क ने प्रिजर्व करके रखा। Now let's learn about Sun Temple, Konark. So the Sun Temple at Konark in Odisha was declared as World Heritage Site by UNESCO in 1980. So UNESCO ने 1984 में सन टेम्पल जो कोणार्क उड़ीसा में है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया था।
and it is one of the most renowned temple of India. और ये बहुत ही ज़्यादा renowned temples में से है. It was built by Narasimhadev I of the Eastern Ganga dynasty. So ईस्टर्न गंगा का डायनेस्टी के जो नरसिम्हदेव I थे उन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था. It was dedicated to the sun god. ये सूर्य भगवान को डेडिकेट करके बनाया गया था. It was built in the shape of his chariot in the 13th century. So ये जब बनाया गया तो इस शेप में बनाया गया जैसे कि सूर्य भगवान अपने चैरिट पे बैठते हैं. मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारे घोड़े और बीच में सूर्य भगवान बैठे अपने रथ में बैठते हो. चैरिट मीन्स रथ. So इसे ऐसा डेवलप किया गया, ऐसा बनाया गया है. ये कब बनाया गया था? 13th century CE में बनाया गया था जब, और इस शेप में था जैसे कि सूर्य भगवान अपने रथ में बैठे. This temple is one of the most well-known temples in India, and it is also known as the Black Pagoda. So इस टेम्पल, ये जो टेम्पल है बहुत ही ज़्यादा well-known temples में से एक है और इसका नाम Black Pagoda भी रखा गया है. इस नाम से जब इसे जान सकते हैं. Mountain Railways of India. Old and outstanding, the Mountain Railways of India is one of the most important and recognized UNESCO World Heritage Sites. So, Mountain Railways जो है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा important और recognized UNESCO sites में से एक है. The heritage site is made up of 3 railways. ये जो site है ये 3 railways को मिला के बनाया गया है. The Darjeeling Himalayan Railways, the Nilgiri Mountain Railways and the Kalka Shimla Railways. So इन 3 railways को मिला के ये Mountain Railways of India बनाया गया. क्योंकि as you know Darjeeling and this Nilgiri Mountain and this Kalka Shimla, these all are hill stations. Hill station में ये railway है, इसलिए इन सबको combine करके the Mountain Railways of India बनाया गया है. They constitute the railway routes in the Himalayas and the Western Ghats. ये जो railway routes हैं ये हिमालयाज और Western Ghats में जाती हैं. Kalka Shimla Railway. This is a picture of it. These rail routes were commissioned by the British during their rule. So ये जो rail routes थे ये Britishers द्वारा जो है बनाया गया था. Most of the trains are still in operation. कई सारे अभी भी ट्रेन ऐसे हैं जो आज तक भी चल रहे हैं. ऑपरेशन आज still in operation meaning they are still running. They run on steam engines and some of the few narrow gauge trains in the world. So ये जो ट्रेन है ये steam engine है, means ये पानी से चलते हैं, पानी के भाप से चलते हैं. So these are steam engines and are some of the few narrow gauge trains in the world. और पूरे वर्ल्ड के जो कुछ narrow gauge trains हैं इसमें से एक है. With sharp curves and steep elevation. इनके जो curves है बहुत ही ज़्यादा sharp है and elevation जो है बहुत ही steep है. These trains can even provide an adventure of a trip to a hill station. So hill station में जाओ और आप इसमें बैठोगे, then you will feel more adventurous while you will travel in these trains. So let's revise, children. A World Heritage Site is a landmark or area with legal protection by an international convention administered by the UNESCO. The Taj Mahal is a white marble mausoleum built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Begum Mumtaz Mahal. The Red Fort was built by Shah Jahan at Tumarg, Delhi as the capital of Mughal Empire. The Great Himalayan National Park is located in Kullu region in the state of Himachal Pradesh. The Sun Temple at Konark is built in the shape of a chariot of the sun god. The Mountain Railways of India are trains that run in the hill stations. So let's now come to the question and answer, children. What is a UNESCO World Heritage Site and what is the purpose of this recognition? So UNESCO has declared several sites as World Heritage Site for the protection of those important buildings and monuments. And what is the purpose of this recognition? So the purpose of this recognition is to conserve the buildings or the monuments for the future generations. Now list the architectural feature of Taj Mahal. So Taj Mahal
is built up of white marble, and it is placed on a square piece of on a square piece, and it is a mausoleum of the Mumtaz Mahal and was built by Shah Jahan, and it is made of white marble. It is so all the four corners are covered with four minarets with that is enclosed with a chhatri, and the Taj Mahal is surrounded by gardens and water all over. So children, like this complete the rest of the questions. The next question is describe the importance of Red Fort and its building. So here you have to read the chapter again and read about Red Fort, and you have to describe its building. What is the Great Himalayan National Park famous for? And the Sun Temple, Konark, is the most renowned temple in India. Justify this. So children, you have to do these questions on your own. And with this, we have concluded the chapter. And children, you have to read the chapter again and answer the given questions. And I'll be waiting for you with a new video. Till then, see you later.